ज्योति स्टेनो टाइपिंग कॉलेज में आप सभी का स्वागत है बच्चों। अब जैसे कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो अब जो 100 WPM की हम डिक्टेशन जो पढ़ते हैं और 80 WPM की जो हम डिक्टेशन पढ़ते हैं इसको लाइव रखा जाएगा, मतलब ये लगातार क्लास चलती रहेगी। जैसे पहले अब हम 100 WPM वाले बच्चों को डिक्टेशन बोलेंगे, उसके बाद 80 वालों को बोलेंगे, 80 वालों को भी टाइप करना होगा और 100 वालों को अपना टाइप करना होगा। तो अब पहले जो पहली डिक्टेशन है जो भी हम जैसे बोलने जा रहे हैं वो 100 WPM डिक्टेशन, यानी कि जो 100 की स्पीड के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो डिक्टेशन नंबर 19। तो ये मैं डिक्टेशन पढ़ने जा रहा हूँ, वेबसाइट के ऊपर लगी हुई है। पहले इसको मेरे से सुनिए, सुन करके इसको टाइप कीजिए, लिखिए, लिखने के बाद इसको पढ़िए। पढ़ने के बाकायदा आपको 10 मिनट दिए जाएंगे, 40 मिनट टाइपिंग के मिलेंगे और वो जो 40 मिनट जैसे पूरे होंगे फिर जो आपका रिजल्ट रहेगा वो आपके सामने यहाँ पढ़ा जाएगा। उसके बाद जो 80 WPM के लिए जो बच्चे हैं वो 80 WPM की डिक्टेशन लेंगे, इसके बाद ही फिर जो है उनका रिजल्ट पढ़ा जाएगा। और उसके बाद जो है जैसे ही 100 वालों का पूरा होगा तो 100 वालों की फिर दूसरी डिक्टेशन पढ़ी जाएगी और ये लाइव ऐसे चलता रहेगा और लाइव आप साथ साथ अपने रिजल्ट्स को देखते रहोगे। ये क्लास रहेगी ऐसे ही लगभग 5:30 बजे तक, क्योंकि जैसे 6:30 बजे दूसरी जो है टाइपिंग क्लास स्टार्ट करनी होती है। तो ये करेक्ट इसको हम डेली 2 बजे स्टार्ट करेंगे और सुबह जो है इसको करेक्ट जो है डेली 9 बजे स्टार्ट करेंगे। तो 9 से 1 तक रखेंगे, 1 से 2 का लंच रहेगा, 9 से 1 यानी कि लाइव रहेगी क्लास। इसमें मतलब डिक्टेशन पढ़ते जाएंगे और रिजल्ट जो है यहाँ पर आते जाएंगे। ये सब बच्चों को लिखनी होगी और इससे एक्स्ट्रा जो वर्क है जो फैब वाले हैं वो एक्स्ट्रा वर्क अपना करते रहें, लेकिन ये अनसीन डिक्टेशन अब आपको लिखनी भी पड़ेंगी और टाइप भी करनी पड़ेंगी। उसमें जितनी मर्जी एक्यूरेसी आती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पहली डिक्टेशन अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ 100 WPM के लिए। तो 100 WPM के लिए कितने बच्चे जो है, अच्छा यहाँ पर तो करंट व्यूवर्स में तो एक भी नहीं दिखाया जा रहा, यहाँ पर तो अब तक करंट व्यूवर्स 55 हुए हैं। टाइम असल में 2 बजे का है, तो 2 बजे का टाइम है तो इसीलिए थोड़ा सा और वेट किया जाता है 5 मिनट का। हाँ ये जो है ना आप लोगों को भी लिखनी है 100 वाली, हाँ, और 100 की लिखोगे तभी तो कुछ काम बनेगा। और इसकी एग्जैक्ट जो स्पीड अप जो रहेगी वो लगभग जो है 100 ही रहेगी, 100, 105 या 110 बस, अब इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। एग्जैक्ट जो है अब जो है मतलब ये मान लीजिए SSC में जिस तरह बैठे हो उस तरह से पेपर देना है और उसी हिसाब से डिक्टेशन लिखनी है। आपको टाइप नहीं करनी है पटेल, 80 वाली टाइप करनी है, आपको भी 80 वाली टाइप करनी है। ये जो है एक्स्ट्रा वर्क है ये घर पे करो। अब जो है अनसीन लिखना पड़ेगा डेली, वो अलग से आपकी क्लासें रिकॉर्ड होती रहेंगी, लेकिन ये आपको करनी पड़ेंगी। जो मैंने आपको वॉल्यूम्स बताई है MSD वाली चारों, उसकी जो है डिक्टेशंस कर लो 20-20 सारी सीन में, लेकिन ये अनसीन बोलती रहेंगी, आपको अनसीन लिखनी पड़ेंगी और उसको टाइप भी करना पड़ेगा। जब तक आप ऐसा अपना जैसे सिस्टम नहीं बनाओगे तो फिर फरवरी में जीत नहीं पाओगे, ठीक है। तो एक बार जैसे बच्चे जुड़ जाएं तो 100 WPM के लिए कौन कौन जुड़ता है, आप लोग तो एक बार जुड़े, आप जुड़ोगे तभी तो दूसरे जुड़ेंगे। फ़ोन निकाल लो ना, वाईफाई है तुम्हारे पास। लिखनी सबको पड़ेगी ये इसकी स्पीड 100, 105 बस या 110 तक जा सकती है बस। तो अपना नाम लिखें और उसके आगे लिखें 100 WPM डिक्टेशन सर, रेडी फॉर 100 WPM डिक्टेशन सर। विशाल कौशिक ऐसे लिखो, रेडी फॉर 100 WPM डिक्टेशन। 3, 3, 6, 2, 8, 8 बच्चे बैठे तो 8 तो लाइक तुम्हारी होनी चाहिए।
पटेल लाइक कर दिया करो ना। उड़े तेरा फोन कहाँ है? यूट्यूब उसमें कर लेना, म्यूट कर ले आवाज को, बस आवाज तुमको यहाँ से सुन रही है। रेडी फॉर 100 WPM डिक्टेशन सर। अंकित रेडी फॉर 100 WPM डिक्टेशन। विशाल कौशिक रेडी फॉर 100 WPM। रानू यादव रेडी फॉर 100 WPM डिक्टेशन। आशुतोष पटेल रेडी फॉर 100 WPM डिक्टेशन। निखिल रह गया। दीपक रह गया। दीपक हासी। 4 और 4 8 लाइक तो तुम्हारे हो जाने चाहिए थे। मनीषा रेडी फॉर 100 WPM डिक्टेशन 7। एक किसने लाइक नहीं किया? निखिल शर्मा रेडी सर। 100 WPM डिक्टेशन लिखो ना। ये 100 WPM डिक्टेशन जो है इसका लाइव टेस्ट होगा, उसके बाद 80 का होगा। लाइक पूरे हो गए। ट्रायल वगैरह बोलना है, सीधा एक्चुअल बोलें। डिक्टेशन स्टार्ट आफ्टर 5 सेकेंड। Sir, I think the bill is a consequential one, since the entire coal mines have been taken over by the government. Naturally, the board and others who used to look after the mines during the regime of the private sector had to be changed. It is more or less technical. The only point is that there has been a little bit more of charges, keeping in view the conditions, the price rise and other things. Otherwise, the bill should be accepted by the House as it stands, repealing the previous one. Sir, I support the efforts and endeavors made by the Honorable Minister, a suitable person to look after the public sector institutions because of his conviction. Sir, in a capitalist social order as we are in now with the joint sector, this sector and that sector, however much we have been putting things in a nice way, the fact remains that the instruments that we are having who bear the real brunt, they do not believe in the philosophy behind the public sector. That is the problem, that is the incongruity, that is the contradiction in our society. That is the peculiar type of pattern of the social system that is evolving now. We find it in a very naked form in this sector. The bill has gone for the best as it can for conversation. Why do we conserve the best to utilize it in the possible way and develop the minds so that we can make use of it
in the best interests of the nations. Even when we took over, we were not faced with the conditions as we are faced with today in regard to the coal mines. Naturally, after 2 years of taking over, we should make a review and assessment and go forward accordingly. The bill is well timed and the bill has taken care of most of the things, but still I will point out certain things which, if the Honorable Minister kindly pays attention to them, may improve the position. Producers are in a sole way or in a monopoly way in an advantageous position for distribution. As you know, we tried with venture, with courage to take over wheat or rice. We failed because of many reasons. One of the main reasons is on the question of production we had little control. But here is a case when we are producers ourselves. We can take over the distribution of iron. If that ID won even now, the problem of price rise for coal will be checked. Secondly, proper distribution according to the needs of the core sector and to the public as a whole will have a proper look, a better look than what it is today, and only then can we possibly prove before the people that nationalization is good, that public sector administration will be beneficial to the country, and it can also be viable. Therefore, I suggest that the Coal Mines Authority should themselves set up a distribution agency. Thirdly, apart from the captive mines, distribution agencies should be started by the Coal Mines Authority at various places, big places. Different state governments can be brought into the picture in the distribution system, and they can also be made responsible in the state sector. The Coal Mines Authority should arrange this system in consultation with the state governments concerned. The state governments will take charge of all or some collieries and move the material required to the respective places. They can do it through the state machinery. There are three things to be done: developing, conserving, and distribution. I take all the three together. Sir, the minister has not done anything on the question of distribution so far as the bill is concerned. People are becoming anti-public sector. The middlemen are taking the best cream. With the result, the people in the country are getting fed up and frustrated. Whenever we talk of public sector and take over, they are against it, and resentment is coming from the very people who asked you to take over. It is these people who gave you courage to take over that it was an illusion, and they are delusioned because they do not want to pay double or triple. Therefore, I again emphasize that the bill is incomplete because it does not take care of distribution. By take over, you have only liberated the slaves.
Now you have to look after those slaves. You have not liberated the coal miners who are best paid in the world. Go to any country in the worst paid, now, of course, a little better than what it was. But if you take into account their real wage, it stands at 1960 price. I do not look at labor as deity. Working class is the sector to lead the nation and to change the social order. It is a great instrument. It is the biggest instrument for changing the social order. Now, sir, I come to the question of distribution. This is incomplete in the sense that distribution has not been taken care of. If you can't take over the distribution side, and if you do not bring forward another bill, this will be an incomplete thing. It is not the small farmers, for the middle farmers, or the big peasants who are producing things, but it is you who are producing this, and so distribution also should be taken care of by you. Therefore, another bill along with this should come, and if it does not come now, it should come immediately after this. Then, sir, I come to another question, which is a painful question, and it is the question of corruption. I do not say that there is no corruption in the private sector. ये स्पीड रही है लगभग 104 के आसपास, और आपका समय शुरू होता है अब। 10 मिनट आपको पढ़ने के दिए जाते हैं, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, इसको आपको लिखना है। अब मैं बनाने जा रहा हूँ दूसरी डिक्टेशन। ये 80 WPM वालों के लिए है। 80 WPM वाले रेडी हो जाएं लिखने के लिए। और ये जैसे वेबसाइट पे भी लगा दी जाएगी साथ के साथ। रेडी? 80 WPM वाली डिक्टेशन स्टार्ट आफ्टर 5 सेकेंड। नोट पैड पे लिखते हैं, जो एक्चुअल डिक्टेशन होती है नोट पैड पे लिखी जाती है। अभी तो लिख ले इस पे, अगर नहीं है तो अभी लिख ले कॉपी पे, नहीं तो नोट पैड पे ही लिखनी होती है। नोट पैड वहां से बाहर से मिल जाते हैं, सर को बोला करो दे देंगे। डिक्टेशन स्टार्ट आफ्टर 5 सेकेंड। नाउ सर, व्हेन द 5-year plan was under discussion, I happened to be a member of the Committee of Parliament which was dealing with resources, and I happened to belong to that school which thought that the target of the 10th 5-year plan was much too big for our resources,
internal as well as external, and the alternative that I, along with others who agreed with me, suggested was that we should fix a series of priorities and cut down those which were non-essential, and that in the alternative we should extend the period of the plan to 6 years or 7 years. Parliament, after debating the whole issue unanimously, agreed in both the House that the targets of the 10th 5-year plan as laid down by the Planning Commission should be carried out. When Parliament came to that decision, it had before it the minute of dissent written by Professor Rao as well as by one of the members of the Planning Commission. Both these gentlemen had also warned that the target of the plan was much too big for the resources of this country. However, Parliament took that decision, and after that decision, we had a general election in the country. The 10th 5-year plan was before the country, and the country by an overwhelming majority approved the plan and returned this party in greater numbers in the Lok Sabha this time than was the case last time. Therefore, it is too late in the day to ask the Finance Minister or the Government of India to scale down the targets of the 10th 5-year plan. We are a people and also as a parliament are now committed to the execution of this plan, wherein a target of rupees 48,000 crore was fixed. It is now, I believe, increased to rupees 52,000 crores or rupees 54,000 crores. Now, when we have agreed on that basic point, then we must find the resources to implement that plan. For some time, we had also debated the question of deficit financing, which, of course, it a euphemism in modern parlance for the printing of notes. When we need money, we issue treasury bills, and notes are issued by the Reserve Bank. This sort of thing cannot continue forever. We must be prepared to make whatever sacrifices are needed to implement the 10th plan. Therefore, I submit starting with these two assumptions, namely that the plan target has got to be implemented, and secondly, the deficit financing has got to be avoided both in the interests of the economy as well as of progress. We are left with only one option, namely to impose taxes. I know that our present finance minister, Dr. Manmohan Singh, is a man of conviction, and what is more important, has the courage of his conviction. That is why I think in living memory, he is the one finance minister who has come out with this bold and courageous plan of imposing taxation
to the tune of rupees 1000 crores in one single years. To impose taxes of the dimension of rupees 1000 crores in one single year requires tremendous courage, and I must congratulate him for the step that he has taken, because it was the least that any finance minister could do, faced as he was with the circumstances which I have just narrated. With the imposition of these taxes, the uncovered deficit dwindles down to rupees 500 crores. That itself is a great help. I believe the government should take immediate steps when we are taking very drastic measures to tax every sector of society, from the rich to the poor. It becomes a duty, in fact, a trust, that the money that we raise is spent as carefully and as economically as possible. In the general elections, I too had, along with other honorable members of our party and other parties also, decided to go into the country, to the villages and towns and everywhere. The people did not mind these taxes, but the grievance is that some of the money or a lot of money is being wasted. There was the grievance with regard to corruption on the lower levels of the officialdom, and what is more, that there was considerable wastage. Every official, even a small official, seems to be having a jeep or a Maruti and is running about burning petrol and spending on TA, DA, etc. And the work is being rushed through in the months of February and March in order that the grant may not lapse, as if the taxpayers' money were meant to be sacrificed ruthlessly and mercilessly, whatever happens. Therefore, it becomes necessary for the government, both at the center and in the states at all levels, to see that all the money raised and spent in these plans is fully utilized. इस डिक्टेशन को मैं आपको लगा देता हूँ वेबसाइट के ऊपर। दस मिनट आपके पास भी पढ़ने के।
ये आप लोगों को भी टाइप करनी है, लग गई है, पढ़ो इसको जल्दी से, फिर टाइप करो, जितनी मर्जी एक्यूरेसी आए उससे कोई मतलब नहीं। अगर आज एसएससी टेस्ट लेता है तो क्या है, आपका क्या पोजीशन रहता है? 4 मिनट तो तुम नहीं जाता, तुमने वेबएससी खराब कर दिए।
कितने परसेंट लिखी गई है? हैं? कितने परसेंट लिखी गई है? हाँ, तो इससे अगली 147 बोल जाएगी, उसकी आउटलाइन देख लो। तेरे से कितने परसेंट लिखी गई है? वन 147 का प्रैक्टिस कर लो, उसको अगली बोलेगी। रन तेरे से लिखी गई कि नहीं लिखी गई? तो टाइम हो गया, टाइप क्यों नहीं कर रहा? जो बच्चे 100 WPM डिक्टेशन, 80 WPM डिक्टेशन जैसे हमारे साथ लिखना चाहते हैं और टाइप करना चाहते हैं, वेबसाइट के ऊपर अपना रिजल्ट भी देखना चाहते हैं साथ साथ, तो इस वेबसाइट के साथ जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखा वेबसाइट का, jyoti.stenotypingcollege.com, उस पर रजिस्ट्रेशन कर लें अपना। और डिक्टेशन में हो तो जैसे उसकी तो फीस 1000 रुपये महीना है, डिक्टेशन वाला कोर्स ले लीजिए। और उसमें जो है फ़ोन में यूट्यूब चलाइए और क्या कहते हैं, वेबसाइट को जैसे लैपटॉप पे कंप्यूटर पे खोलिए, लैपटॉप के साथ कीबोर्ड जोड़ना ज़रूरी है, और फिर जो है उसको आप टाइप कर दीजिए। वन 147 कर लेना अगली। जब ये नहीं लिखी गई है ढंग से तो 147 कर ले। तेरे पास 147 है? किस में? साइट पे थोड़ी होगी गुड़िया। अच्छा, अब तेरे को फोटो दूं? हुए ये ले, फोटो खींच ले। क्या है तेरे पास? ये डाउनलोड कर ले, क्लियर स्कैनर डाउनलोड कर पहले। क्लियर स्कैनर है? वन 147 कैमरे के आगे अड़ा हुआ, जल्दी हट। हाँ, ये लिखा दो बैक ऑफ 147, पढ़ तो ले। तुम अपना एक ग्रुप बना लो ना, उठा के व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, उसमें मेरे को भी ऐड कर लो, मैं फोटो डालता रहूँगा।
जो स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव डिक्टेशन लिखना चाहते हैं और फिर टाइप करके अपनी एक्यूरेसी भी देखना चाहते हैं वेबसाइट के ऊपर, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ के साथ जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्योति stenotypingcollege.com हमारी वेबसाइट है। यूज़र लॉगिन पे जाइए, एडमिशन फॉर गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन बटन पर क्लिक कीजिए, वहाँ जैसे अपना पूरा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद डिक्टेशन स्टेनो के अंदर जाइए और डिक्टेशन वाला ले लीजिए, क्योंकि अगर आपको खाली डिक्टेशन लिखनी है तो उसका मंथली सब्सक्रिप्शन है। और जो है हमारे साथ ये लाइव टेस्ट आप दे पाओगे, लाइव आपका रिजल्ट यहाँ बनता रहेगा।
पटेल ऐसे लाइव क्लास में घूमता रहेगा तो कैसे काम चलेगा? हाँ, जो वर्ड आता है उसको नहीं रिपीट करते हैं, जो वर्ड नहीं आता उसको बनाते खाली स्पीड से, तब डिक्टेशन कवर होती हैं। ये लाइव डिक्टेशन टेस्ट हैं, इसमें 80 और 100 WPM की डिक्टेशनें बोली जा रही हैं। जो बच्चे हमारे साथ मिलकर के टेस्ट देना चाहते हैं, जैसे अभी 2 डिक्टेशनें पढ़ी जा चुकी हैं, एक 100 स्पीड की, एक 80 स्पीड की, अब उसको बच्चे टाइप कर रहे हैं। जैसे अब डिक्टेशन नंबर 19 जो है वो टाइप हो रही है, जो मैं बोल चुका हूँ। एक केसी का मतलब 80 के लिए केसी 146 बोली जा चुकी है, उसके लिए एक बच्चा टाइप कर रहा है खाली, बाकी जो है 148 के लिए 147 के लिए 2 वो कर रहे हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने का भी एक तरीका होता है, ये नहीं कि पूरी डिक्टेशन लिखनी है, जो वर्ड नहीं आता है केवल उसको बनाना होता है और उसको स्पीड से बनाना होता है। इस तरह से डिक्टेशंस कंप्लीट होती हैं। फिर आप एक दिन में जैसे 6 से 7 8 8 10 10 डिक्टेशन कर सकते हो, और जो है कम ही टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट अचीव कर सकते हो। गुड़िया तेरे को पूरी लिखनी पड़ रही है, फिर तो तूने बेसिक भी मैं ढंग से नहीं किया अगर पूरी लिखनी पड़ रही है तो। क्योंकि थ्योरी वाला वर्ड तो फटाक से बनेगा, थ्योरी वाला तो अटकेगा ही नहीं। वर्ड अटकेगा स्पेशल या थोड़ा जो सुना हुआ नहीं है। पंद्रह मिनट बाकी हैं अभी टाइप के।
शाबाश शाबाश शाबाश। जो बच्चे हमारे साथ जो है डिक्टेशन जो बोली जाती है वो लिख करके टाइप करना चाहते हैं, वेबसाइट पर अपनी कुर्सी देखना चाहते हैं, तो पहले तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे रखा है ज्योति स्टेनो टाइपिंग कॉलेज.com। उस वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। स्टेनो कोर्स के अंदर डिक्टेशन वाला कोर्स ले लें और फिर जो है माई कोर्सेज़ के अंदर, माई प्रोफाइल में तो आपका रोल नंबर होता है और माई कोर्सेज़ के अंदर जो है SSC 100 WPM डिक्टेशन KC के नाम से फोल्डर है। तो अलग अलग डिक्टेशंस हैं। तो जैसे मैं अभी जो पढ़ रहा हूँ वो SSC 100 WPM डिक्टेशन और साथ में KC, यानी कि एक 100 की स्पीड का पढ़ रहा हूँ और एक 80 का। तो जो भी आप टेस्ट देना चाहते हो पहले लिखिए, लिखने के बाद जो है वो पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको टाइप कर दीजिए। और हमारे साथ लाइव देना है तो भी थोड़ी देर में अभी दूसरा स्टार्ट होगा 100 WPM का। उसका भी टाइम बचा है लगभग 10 मिनट। वो 10 मिनट बाद स्टार्ट होगा। और ये जो टेस्ट हैं ये आप बाद में भी दे सकते हैं। ये आप टेस्ट जो है बाद में भी दे सकते हैं, ये नहीं केवल अभी अभी देख सकते हैं आप। जिन स्टूडेंट्स को जैसे मेरे से कोई बात करनी है या कोई बातचीत है, तो ये जैसे ये मेरा नंबर है 7206905115। इस पे आप जो है मैसेज कर सकते हो, ठीक है। 7206905115। और ये जो टाइप कर रहे हैं 100 वाले, ये 973 वर्ड हैं, यानी कि ये 27 वर्ड कम हैं। तो लगभग 5 मिनट पहले ही टाइप हो जानी चाहिए थी ये। तेरी 7 मिनट पहले हुई टाइप। टाइम कितना बचा हुआ है? 11 मिनट और लेट चालू किया तूने। 40 मिनट की तो दी थी।
40 और 14 54 7 मिनट रहनी चाहिए। इस तरह से लाइव नहीं चल पाएगी, फिर दिए ये रिकॉर्ड करके ही दे दे बस। लाइव के लिए तो पूरा सिस्टम होना चाहिए ना ठीक, टाइम टू टाइम जैसे आप करो तब तो फायदा है। मैं सोच रहा था 3 डिक्टेशन करवाने की इस हिसाब से होंगी 2, क्योंकि अब बज गए 3। अभी आपका रिजल्ट बनने में 10 मिनट और लगने, 3 10 3:30 तक डिक्टेशन पड़ी गई, उसी में बजा दिए 5। रानू तेरा कितना टाइम बचा है? 20। और तेरा ही बस एक डिक्टेशन और होगी। कल से जो है क्लास में 9 बजे पहुंच जाना है यहाँ, ठीक है? वो खाने वाले को बोलो भाई खाना पहले दो। 10 बजे तुम तो अफसर टाइम आओ हो। क्लास ही नहीं हो पाएंगी, फिर डिक्टेशन ही नहीं हुई तो फायदा क्या हुआ? डिक्टेशन तो कम से कम दिन में 5-6 विद ट्रांसक्रिप्शन। हेलो हेलो हेलो, तो है तो ये जो क्लास में जो टेस्ट दे रहे हैं इनसे अलावा यूट्यूब के माध्यम से कोई टेस्ट दे रहा है? यूट्यूब के माध्यम से घर बैठे कोई टेस्ट दे रहा है? एक बार लिख के बताएगा। $100 वाला या 80 वाला?
शाबाश शाबाश शाबाश। जो बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़ करके डिक्टेशन लिख करके टाइप करके अपनी एक्यूरेसी जानना चाहते हैं, वो पहली बात तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे रखा है ज्योति stenotypingcollege.com। उस पर क्लिक करके यूज़र लॉगिन पर क्लिक करें, एडमिशन फॉर गवर्नमेंट जॉब ओनली बटन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टेनो कोर्स में डिक्टेशन वाला कोर्स ले लें और जो है हमारे साथ लाइव या रिकॉर्डेड फॉर्म में जिस तरह भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं और एक कंपटीशन में लाइव भी शामिल हो सकते हैं। इंटरनेट इसमें रिक्वायर्ड रहेगा। शाबाश शाबाश शाबाश। यूट्यूब के माध्यम से कोई बच्चा टेस्ट दे रहा है 100 वाला, 80 वाला, जिन्होंने पीछे रिवाइज करके जैसे किया हो, क्योंकि जैसे आप इसको रिवाइज करोगे तो पीछे भी चला जाता है और आप वहाँ से भी टेस्ट दे सकते हो।
कितना टाइम बचा हो आप लोगों का? और तेरे अंक कितने पूरा कंप्लीट टाइम में हुआ है? 6 मिनट बचे थे। हाँ दीपक, तेरा कितने मिनट पहले? क्या क्या भेजा नहीं? नहीं, मैंने 147 पूरी भेज दी है। देखते हैं किस किसने दिया है टेस्ट। लाइव टेस्ट था ये, डिमांड बड़ी कर रहे थे सर, लाइव दो टेस्ट, लाइव लो। टाइम क्या हुआ है? 10 तीनों नहीं दिया होगा बस। 68% एक्यूरेसी, 68.92। दीपक हांसी 72.45। अंकित सिंह 82.12। इतनी कम एक्यूरेसी कैसे आई दीपक तेरी? दीपक हांसी, हाँ क्या गलती कर दी? हैं? क्या करने चक्कर में? Since is 1. Sir, I think the bill is consequential 1. wrote था since the entire coal mines. Since is कौन सा वर्ड होता है? The entire coal mines have been taken over by the government. गवर्नमेंट में क्या दिक्कत आ गई? गवर्नमेंट नेचुरली द बोर्ड, ये वर्ड ही छोड़ दिए। द बोर्ड एंड अदर्स हु है, हु यहाँ स्पेस मार रखा है, यूज्ड टू लुक आफ्टर द माइंस ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर हैड टू चेंज, हैज टू बी चेंज्ड था, तो चेंज तो वर्ड ही नहीं हुआ, बी चेंज्ड, ये दो हो गए। इट इज़ मोर, टेक्निकल में क्या दिक्कत है? टेक्निकल स्टॉप था यहाँ पर। द ओनली पॉइंट इज दैट, तेरे को स्टॉप का पता नहीं लगता? फुल स्टॉप का कम पता लगता है, फिर 80 में लगना तेरे को है? फिर इसमें पॉज देता तो हूँ मैं, पॉज देता हूँ भैया जी, पॉज के बगैर कैसे काम चलता है? अब तुम्हारी आ गई 20 तो लगा रखी है वहाँ। चलो लिखने के लिए रेडी हो जाओ। यूट्यूब पर भी है कोई जो 100 WPM डिक्टेशन लिखने के लिए रेडी हो और टाइप करने के लिए भी रेडी हो? यूट्यूब पर है अभी कोई 100 WPM के लिए डिक्टेशन के लिए? हो तो कोई मतलब जो YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, 100 WPM डिक्टेशन लिखने के लिए कोई रेडी है? कोई नहीं मिला, आप ही लिखो फिर। बस ये लास्ट क्लास करते हैं, फिर अपना वैसे ही बनाते हैं जैसे बनती थी, हैं? नहीं तो टाइम देकर, जैसे अब 2 बजे का टाइम दिया गया था,
और उस हिसाब से किया नहीं। डिक्टेशन स्टार्ट आफ्टर 5 सेकेंड। Sir, I would like to mention briefly that the basic policy of this government is to raise the standard of living of the working classes, weaker sections, and other backward classes. Welfare of workers is one of their main concerns. Keeping this objective in view, we have done as much as possibly could be done. Today, one of the best paid workers of the coal mining industry, the average pay packet he carries home is more than rupees 1000 per month. This is much better as compared to practically any other industry in the country. I do not say that we had reached an ideal state. A lot of improvement has been made and a lot needs to be done. We have opened technical schools for the children of workers where they get technical training. One day, the chairman of Coal India will be a miner's son. That is our aim. Regarding compensation, a few days back there was a calling attention, and on that occasion the details were given. So far as the welfare fund is concerned, I have given details about the advisory committee on which workers are represented. According to the latest tally, we have produced 110 million tons of coal, and this will bring about rupees 10 crores to the welfare fund. But we do not confine our welfare activities to this amount. We spend much more. In fact, this year we will reach a target of rupees 20 crores to rupees 30 crores, whereas the cess will only bring about rupees 10 crores. So the effort is there so far as drinking water facility is concerned. Before nationalization, only about 2 lakh population in the coal mine area was covered. Now about 12 lakhs population in the coal mine area has been covered. The honorable member himself read out particular portion of the speech regarding our claim for 1980-81. There may be a difference of 4 to 5%. But the allegation that the workers are not given proper share and no effort is made to supply drinking water is not correct. As I said, we do not claim that we have achieved 100% success in our efforts. The efforts have also increased. I hope that within the next few years we will be able to cover 100% of our coal mining workers and their families. This is our priority region. We are going to have a crash program to cover the entire workers' population. So far as housing is concerned, we built 6,000 houses last year, and we intend to build many more houses as compared to last year. We also give subsidy to workers to build their own houses, and a great number of them have their villages close by and they do not need the houses, which short of we want to give to them. Of course, there are
many constraints like cements and so on, and we are trying to find alternatives. Sir, I have thrice or four times called meetings of the Reserve Bank and of the chairman of the banks to take action. We have created a cell, we have created a monitoring system, and we have proposed certain measures whereby this industrial sickness can be stopped. We have proposed that where there are units having more than 10 lakhs of rupees from the banks, there should be a system whereby every quarter or 6 months all accounts should be submitted to the banks only late on the Reserve Bank, so that we know not only the industrial sickness but prospective industrial sickness also we can judge. Therefore, we have very careful to take the measures when we say that in 1979 these are some of the details obtained by the Reserve Bank. It is after all the necessary inquiries with the various branches that they had collected the data. Even a single branch not providing the details can stop us from giving the total figures and facts to the House. I would like to tell that one of the points raised was that monopoly houses are alone responsible for rupees 300 crores having been lost. Sir, it is not correct. The position is this: the number of sick units belonging to MRTP companies as on 31st March 1980 was 46 and not 94, as the Honorable Member referred, with advances of rupees 100 crores and not rupees 300 crores. Secondly, let it be known that in this attempt of reviving the sick units, the government and the banks often called upon to help those units which are required to run for social justice. There are instances where pressures come from not only trade unions but from honorable members and the states also, that if a particular unit is not allowed to be revived, it will result in mass unemployment. I am caught a number of them. These are the cases where, on the ground of social justice, the banks have to come forth and help these units by banking and advances. Similarly, in a number of 6 units that we mention and discuss there, I would request this House to note also that cooperative units, units run by the states and units run by the central government under its financing, they are also included, and you will agree with me that these are the units run not for anyone's favor, not for financing anybody, not for allowing somebody to loot, but purely from a social justice view point to see that mass unemployment does not generate. Therefore, I would like to say that we are doing our best. The RBI is doing its best. The LDBI has also appointed subcommittees. Therefore, I am not in agreement and I am not able to accept the proposal that something like a CBI inquiry should be instituted unless there is a case. ये भी स्पीड 104 105 की रही होगी. वेबसाइट पे इसको लगा दिया गया है. एसएससी
100 WPM डिक्टेशन नंबर 20 के नाम से, वहाँ पर जाकर टाइप कर सकते हैं। इस क्लास के अंदर इतना ही बच्चों, नमस्कार बच्चों।